Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in today's online session. Following are the objectives for today's lecture. As you all know that we are discussing chapter number 21, that is biochemistry. So today we will discuss the nutritional importance of carbohydrates because we have already discussed the topic of carbohydrates in detail in the previous lecture. So here we will discuss only the nutritional importance of carbohydrates. Then we will talk about protein, its classification, and its properties, etc. So, dear students, this is the importance of carbohydrates. I would like to elaborate this, and I am going to share with you the few functions of carbohydrates. You can read out this slide, but this slide is general. I'm going to share with you some information relevant to your text, and that is very important regarding paper point of view. You should know that carbohydrates perform various functions. For example, they spare the proteins, and the purpose is that the proteins may concentrate on building, repairing and maintaining. मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के लिए. मीन वाइल जो प्रोटीन्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग के ऊपर. एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कीटोसिस. So you need to remember that for fat to be metabolized properly, carbohydrates must be present. यानी फैट्स जो होती हैं, लिपिड्स या फैट्स आपकी बॉडी में, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का होना प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते तो लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स आर यूज फॉर एनर्जी. एकदम से बहुत ज़्यादा फ़ैट को एनर्जी के लिए मेटाबोलाइज बॉडी करना शुरू कर देती है. और फिर द बॉडी इज़ नॉट able to handle this large amount so quickly, so it accumulates ketonic bodies which make the body acidic. This causes the condition called ketosis. तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपकी बॉडी में फ़ैट के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का होना ज़रूरी है. अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते तो अब्रप्टली एकदम से इतनी फ़ैट आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होगी जिससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, एकदम से उसे डील नहीं कर पाती. और वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कीटोनिक बॉडीज़ के अंदर. और कीटोनिक बॉडीज़ का लेवल जब आपकी बॉडी में बढ़ता है तो वो एक एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इन द फेवर ऑफ द बॉडी, एंड दैट इज़ टर्म्ड एज कीटोसिस. Other than that, certain type certain type of carbohydrate supports the growth of healthy bacteria in the intestine, which helps in digestion. And carbohydrate rich food helps a lot in preventing in preventing constipation and other diseases such as cancer and diabetes, etc. So this is the importance that you have to remember. ये वो points हैं जो मैंने आपके text से आपके साथ share किए हैं. Other than that, if I talk about the nutritional benefits of carbohydrates, तो मैं वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करती हूँ. डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर कि वो फूड जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं वो हैं ब्रेड, पास्ता, बीन्स, पोटैटोज़, राइस, सीरियल्स एट्सेट्रा. यानी रोटी खाते हैं आप, चावल खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं आप लोग. अब बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है कार्बोहाइड्रेट्स को लेने के हवाले से और डाइट के हवाले से. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स वन बाय वन ब्रीफली. फर्स्टली यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द बॉडी वेट रेगुलेशन. आपने याद रखना है कि पीपल ईटिंग ए डाइट हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स आर लेस लाइकली टू एक्यूमुलेट बॉडी फैट कंपेयर्ड विद दोज हु फॉलो ए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट. अब ये बात याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ कैलोरीज होती हैं वो फ़ैट्स की निस्बत कम होती हैं. इसलिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने से आपका वेट नहीं बढ़ता, बल्कि इफ़ यू टेक द डाइट रिच इन फैट्स एंड लिपिड्स देन यू आर मोर लाइकली टू गेन अ वेट, राइट. तो आप ये याद रखें कि कैलोरीज कम होती हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के अंदर और लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है. दैट इज़ वाई people who take the food with high contents or high carbohydrate content, उनके अंदर वेट गेन करने के चांसेस कम होते हैं.
And high carbohydrate diets are very helpful because people who take high carbohydrate diets, they are less likely to overeat. वो overeating भी नहीं करते. Now there is another misconception about diabetes. I want to share over here that this is a misconception that consumption of sugar and all results in diabetes, insulin dependent diabetes. एक ऐसी diabetes की condition जिसके अंदर आपको insulin inject करना पड़ती है body में intravenous तरीके से. तो याद रखें कि obesity यानी मोटापा and physical inactivity are the main causes of diabetes and not the consumption of sugar, right? And the people with diabetes उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनका वेट कम हो, और वेट रिडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है एक बड़ा अच्छा सोर्स है. अदर दिन दैट आप ये याद रखें कि डेंटल हेल्थ के हवाले से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि टीथ या टूथ डिके जो है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ ओरल हाइजीन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स, टाइप ऑफ फूड यू ईट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजप्शन ऑफ any fermentable carbohydrates and genetic factors. So this is a very important point I am going to share over here, that foods containing sugar or starch can be broken down by the enzymes and bacteria in the mouth to produce acid which attacks the enamel of the teeth. However, it is not the amount of sugar or the other carbohydrates that is important, but how often they are consumed. After an acid change, saliva produces a natural repair process which rebuilds the enamel, and when carbohydrate containing foods are consumed too frequently or nibbled over time, this natural repair process is overwhelmed and the risk of tooth decay is increased. आप ये बात याद रखें कि जब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट आप लेते हैं एंड उसको जब च्यू करते हैं और उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है आपके माउथ के अंदर, तो उससे क्या उस दौरान क्या हो रहा होता है कि सलाइवा के अंदर और आपके माउथ के अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं एंड डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए. ये आपके टीथ एनामल्स जो है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ये वो लेयर जो आपके टीथ को प्रोटेक्ट करती है उसको डैमेज कर सकते हैं. बट होता क्या है कि नेचुरल प्रोसेस में आफ्टर यू हैव टेकन द फूड और डाइजेशन हो गई तो उसके बाद नेचुरली आपके स्लाइवा के अंदर कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि रिपेयरिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर देते हैं. लेकिन अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं तो और यू आर निबलिंग इट ओवर 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 पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है कि वो जो नेचुरल प्रोसेस होता है एनामल फॉर्मेशन का वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी टीथ की डिके हो सकती है. So, these are the very important points regarding the nutritional importance of carbohydrates. Now, another thing you need to remember over here, that getting active, it has been mentioned in the slide as well, that कि आपकी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द बॉडी एंड टू कीप यू हेल्दी और एंड एक्टिव. कहते हैं कि ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन फ्यूल फॉर द मसल्स. By consuming high level of carbohydrates before, during and after training or an event, glycogen stores are kept well stocked. आप याद रखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि कार्बोहाइड्रेट्स ट्रीज़ के अंदर या प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोलीसेक्राइड नोन एज स्टार्च, एंड इन animals and human beings it is stored in muscles and liver cells in the form of glycogen. तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है. अब एथलीट्स क्या होते हैं, अगर वो हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं तो वो उनके मसल्स के अंदर या उनकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो वेल स्टॉक्ड होते हैं. ग्लाइकोजन वेल स्टॉक्ड होता है विच हेल्प देम मेंटेनिंग देयर बॉडी, और एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एथलीट्स विच कीप देम एक्टिव. So this was all about the nutritional importance of carbohydrates, that what are the benefits of carbohydrates. Now coming towards protein, the molecules which yield amino acids upon hydrolysis are called proteins. Dear students, you need to remember कि ऐसे molecules जो जो amino acids को yield करते हैं. Now the point you have to remember over here is that the subunits of proteins are amino acids, or the building blocks of proteins are amino acids. तो अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है प्रोटीन्स को तो अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड. एंड प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर्स
ऑफ अमीनो एसिड्स. पॉलीमर्स मीन्स एक ऐसा मालिक्यूल जो बहुत ज़्यादा सब यूनिट्स से मिलकर बनता है. सो when number of amino acids join together, a polymer known as protein is formed, and number of amino acids in the protein molecules may range from 2 to several thousand, and protein molecules contain nitrogen, carbon, hydrogen, and oxygen. So these are the general this is general information about protein. Proteins are the basis for major structural components of the animals and plant cells. Now, here comes the very important point that they act as biological catalysts known as enzymes. तो ये बात याद रखें कि enzymes जो होते हैं वो भी प्रोटीनिक नेचर के होते हैं. दे आर प्रोटीन इन नेचर. सो एंड देर इज़ अ वेरी फेमस लाइन that all proteins are not enzymes but all enzymes are protein in nature. तो आप याद रखें कि जहाँ बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं उनमें से प्रोटीन का ये भी एक स्पेशलिटी है कि जो इंजाइम्स हैं दोज आर प्रोटीन इन नेचर. एंड बिसाइड्स दैट they participate in different cell reactions, etc. Now, coming towards the classification of proteins, dear students, you need to remember these details briefly. That there are three types of proteins: simple proteins, conjugated proteins, and derived proteins. Those which give one amino acid upon hydrolysis are simple proteins, and those proteins which are formed by the combination of a protein and non-protein part are called conjugate proteins. आप ये याद रखें कि ऐसी प्रोटीन्स जो कि कॉम्बिनेशन है एक प्रोटीन और नॉन प्रोटीन हिस्से का, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट वैसे भी किसी चीज़ को कहते हैं विच इज़ अ कॉम्बिनेशन. सो इन conjugated proteins, that non-protein part is termed as prosthetic group. And derived proteins, those which are derived from simple and conjugated proteins. Dear students, these are the examples of simple proteins. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि सिंपल प्रोटीन की जो टाइप है, जो कैटेगरी है, उसमें आगे से बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं. जैसे एल्ब्यूमिन्स हैं, आपकी स्लाइड के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि सिंपल प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स. एंड जितनी भी डायग्राम इस स्लाइड्स के अंदर शो की जा रही हैं, जितनी एग्जांपल्स हैं, दोज आर एल्ब्यूमिन्स. ये सारी की सारी एल्ब्यूमिन्स हैं. नाउ कम्स the properties of albumin. They are globular proteins and soluble in water and dilute salt solutions. Precipitate हो जाते हैं ammonium sulfate से, coagulation by heat. So these are the different properties of albumin. Now comes the next category of simple proteins, that is globulin, and all the diagrams in this slide are showing you the examples of globulin. Now coming towards the properties of globulin, they are also globular in nature, sparingly soluble in water, बड़ा likely soluble नहीं होते. ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं डिल्यूट अमोनियम सल्फेट से. कोगुलेशन हो जाती है इनकी हीट पे. कोगुलेट होने का मतलब आपने देखना है, ये आपके असाइनमेंट है और ये बहुत कॉमन वर्ड है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ग्लूटिलिन्स, एंड again they are insoluble in water and dilute salt solution and soluble in dilute acids. And here comes histones. They're present in thymus glands and pancreas, etc., and soluble in water and salt solutions and dilute acids. So far we have discussed albumin, globulin, glutenin, and histones. Basically, you have to remember their names. So these four are types of simple proteins. Now coming towards conjugate proteins, dear students, conjugate proteins are nucleoproteins, mucoproteins, glycoproteins, etc. So the very first type is, the very first example is nucleoprotein, and the example is showing you that where nucleoprotein is present in cytoplasm of the cell, and in the nucleus of chromosome and ribosomes. And the third example is showing you a bacteriophage. Bacteriophage means bacteria eaters. ऐसे viruses जो bacteria को attack करते हैं उनके अंदर भी ये प्रोटीन होती है. And the diagram is showing you a virus. Now coming towards the next conjugated protein, that is nucleoprotein. Sorry, this is the same one. These are the properties of nucleoprotein actually. And now comes the mucoproteins. They are present in saliva and egg white, etc. And then glycoproteins, they are present in bones and tendons and contain more than 4% hexosamine and mucoproteins, and if less than 4%, then glycoproteins. Now coming towards the third category of conjugated proteins, those are phosphoproteins, and their sources are mentioned over here.
कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी दैट इज़ ड्राइव प्रोटीन्स, इसकी जो एग्जांपल्स में उसमें प्रोटीन्स, प्रोटियोजिस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स आ जाती हैं। ये चार टाइप्स हैं, आपने ये चार नाम याद रखने हैं। एंड द स्लाइड्स आर गोइंग टू शो यू these examples. These are proteases, proteins I have mentioned. Now these are proteases, and then peptones, and then peptides. Why I'm not explaining them in detail, this is because according to the modern syllabus, you just have to remember these four names, that is proteins, proteoses, peptones and peptides. And if the details are given in your book, then you will go through the detail just for the sake of short questions. But ये न्यू सिलेबस के मुताबिक इन जो है डिटेल्स को उसने समराइज़ कर दिया है. एंड ऑल यू नीड टू रिमेंबर is the classification: simple proteins, conjugated proteins, and derived proteins. Then you have to remember that in simple protein comes albumin, globulin, glutein, and histones. In conjugated protein comes nucleoproteins, mucoproteins, glycoproteins, and phosphoproteins. And in derived protein comes proteins, proteoses, peptones, and peptides. So this is all for today. Thank you so much. Stay blessed. Stay safe.